Good morning and good evening, students. Welcome to Commerce Kyan with Odisha. Today we'll start with the MCQ discussion of economics. जम्मा पार्टी नहीं सुनियो है ना बहुत आराम कौन तो इकोनॉमिक्स इज डैश साइंस एते भितर जदि चारटा ऑप्शन दिया होची तमे देखिथिबो सब प्रकार साइंस अंडर से कहि दोथिला बाकी कोडा मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज व्हिच टाइप ऑफ साइंस कौन पे पॉजिटिव साइंस wants to know why is it be positive okay इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस काहेंगे कहले सी कोन सोसाइटी रो पॉजिटिविटी पई से काम करिवो मनी केमती अर्न हबो केमती स्पेंड हबो ईच एंड एवरी फैक्टर केमती एफिशिएंटली यूटिलाइज हबो से जिंस विषय से डिस्कस करिवो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस तापर स्कैरसिटी डेफिनेशन वाज गिवन बाय Lionel Robbins consumer surplus was propounded by एथरे कौन करिवो डेफिनेशन गुडा को जते प्रकार अछि कौन कौन थिला हमर स्कैरसिटी वेल्थ वेलफेयर हाउ अब आउ किछ नथिला थिला ना कौन थिला टेक्स्ट बुक आन अब से खुजी पारनी ता खुजिया कोच ग्रोथ हैला तो को डेफिनेशन किए देइची सेडा पाखर रखि देले चारि प्रकार क्वेश्चन एडिया का हिज देन कंज्यूमर सरप्लस वाज propounded माने कोन इन्वेंटेड बाय के इन्वेंट करला अल्फ्रेड मार्शल then microeconomics theory is also known as microeconomics theory not macroeconomics theory is also known as price theory when the utility is increasing at an increasing rate marginal utility is when the utility is increasing at an increasing rate marginal utility is utility माने कौन मते कहलो को रेट रे इंक्रीज होच इंक्रीजिंग रेट रे इंक्रीज होच तो मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग बुझिरा ना नहीं इंक्रीज भी होची इंक्रीजिंग रेट रे होची दैट इज इंक्रीजिंग फेज तापरे इंक्रीज होची कांस्टेंट रेट रे होची कांस्टेंट फेज इंक्रीज होची डिमिनिशिंग रेट रे होची तो इट इज डिमिनिशिंग फेज बुझि पाल ना नहीं डिक्रीज नहीं माने इंक्रीज हो बट डिक्रीजिंग फेज रे माने 10 रे चेंज हबो 5 रे चेंज हबो 3 रे चेंज हबो इंक्रीज तो होथियो बट डिफरेंस माने कम रे होथियो हैला कंज्यूमर सरप्लस इज आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ कंज्यूमर सरप्लस रो मीनिंग कोन डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड एक्चुअल प्राइस दे डू पे ताके कोन पेमेंट करिवे आउ कंज्यूमर पेमेंट करबा को इच्छा करथिबा मैक्सिमम प्राइस बुझि पारे ना नै कंज्यूमर सरप्लस माने होची मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ताको कोन इच्छा अछि माने गोटे प्रोडक्ट पे से केते अमाउंट स्पेयर करि परिबो आउ एक्चुअल प्राइस से दीडारा कोन डिफरेंस हैला यूटिलिटी इज डैश इन नेचर यूटिलिटी इज डैश इन नेचर यूटिलिटी माने कोन सैटिस्फैक्शन कार्डिनली कहले कोन नंबर्स रे मेजर हेई पारथर अछि ऑर्डिनली कहले कोन क्वालिटी रे मेजर हेइथिबार अछि तो यूटिलिटी जहां भी अछि सेडा कार्डिनल और ऑर्डिनल दीडा जाको फैक्टर को कंसीडर करूची बुझि पालो कोन कहलो न्यूट्रली कांस्टेंट the want satisfying power of a thing is called utility utility रो मेन मीनिंग होची कोन कंजम्पशन ठीक है यूटिलिटी पाखरे लिखि दियो कोन कोन क्वेश्चंस आसी परिबो
है यूटिलिटी पाखर लिखि दियो कंजम्पशन satisfaction want satisfying power consumption power satisfaction and want satisfying power एजा सब आमे कौन कहूँ यूटिलिटी कहूँ ठीक अच्छी तापर ता तळे आगा ओडे क्वेश्चन अच्छी कौन देख यूटिलिटी इज डैश इन नेचर subjective in nature कौन पे ऑब्जेक्टिव की टू द पॉइंट से कोई परियो कि माने एडा इंदी हेले सेडा सिंदी हबल तमे कोई परियो कि नहीं परफेक्टली किछि डेमोन्स्ट्रेट करि परियो ना तो सब्जेक्टिव माने डिपेंड्स अपॉन द पर्सन डिपेंड्स अपॉन द एस्पेक्ट यू आर मेजरिंग तो ये सब जिंस रहियो सो दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव हैला क्लियर when marginal utility begins to be negative the total utility starts to decrease marginal utility जेतलो को नेगेटिव हे जिवो total utility कोन हबो माने कोन जीरो हेला ली कोले तार satisfaction level almost सरीला बुझिला ना नहीं सरीला ली कहले एबे नेक्स्ट कोन हबो ताको dissatisfaction start हबो then which of the following is not the central problem of society not the central problem of society what to produce whom to produce तीनटा जा कोन हमरो central problem of the society थिला सेतिरा हमरो दीडा प्रकार इकोनॉमी आस्तिला कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड सॉरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रे कोन होथिला हमरो कैपिटल गुड्स रो प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दिया होथिला सोशलिस्टिक इकोनॉमी रे कोन होथिला जो हमरो नेसेसरी गुड्स माने एसेंशियल गुड्स को प्रायोरिटी दिया होथिला तो एडी कोन प्रॉब्लम हमरो नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम कोडा व्हाट टू ईट एडा गोटे प्रॉब्लम रे जोड़ा मिले सेडा खाइयो ऑप्शन अधिक थिले प्रॉब्लम भोजी गले एडा प्रॉब्लम हां ना नहीं नहीं रे टिके नहीं धनु कोन स्टार्टर खाइयो सी कहूची तमे कोन खाइयो पीपीएफ देखो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पीपीएफ रो केते प्रकार क्वेश्चन आछि पीपीएफ माने कोन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एडा कोन देखौथिला गुटे प्रोड्यूसर ता पाखरे थिबारो अवेलेबल रिसोर्सेस को धरिगिरी मैक्सिमम पॉसिबल माने प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशंस कोन कोन अछि से सब जिंस देखौथिला कोडारे पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रे बुझी पालो तो एटा सब बळे नेगेटिवली स्लोप्ड कोन पे व्हाई इज इट नेगेटिवली स्लोप्ड कोन पे ना ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने तार स्लोप माने कोन रे इमती थाउच तो से कहूची कोन एटा नेगेटिव कोन पे व्हाई इज इट इंटरडिपेंडेंट कोन पे ना तार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई माने जदी तमे गुटे जिंस छाडी दउचो तो ताडो अधिक कॉस्ट कोडा हे जिवो ना तो जो जिंस तमे करूचो बुझी पालो ना नहीं दिस इज मोर बेनिफिशियल जदी तमे गुटे जिंस डी करचो तो अदर थिंग विल बी मोर बेनिफिशियल जदी से जिंस करचो एटा बेसी बेनिफिशियल लागियो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो प्रकार तमे देखो गुटे बेनिफिट अछि ले कहले गुटे डिसएडवांटेज तो थिबो तो एती मन रखो पीपीएफ इज नेगेटिवली स्लोप ड्यू टू increasing opportunity cost तापरे the dash price that a customer is willing to pay for a given quantity is called the demand price maximum price माने गुटे जिंस रो केते डिमांड अछि तमे केते मैक्सिमम गुटे कस्टमर रो एक्सपेक्ट करि पारिबो गुटे कस्टमर केते इंटरेस्टेड अछि गुटे जिंस किनिया पई all these things are what demand price goods and services necessary for living are needs बुझी पालो necessaries or needs hello then what is the central problem of every economy scarcity of economic resources माने
resources are limited, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी सब माने सब प्रकार इकोनॉमी रो सेंट्रल प्रॉब्लम होची स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स. Who defined economics as science which deals with wealth? Human wants are unlimited. Goods and services necessary for living are called in a mixed economy which sectors are found? Private sector and public sector. The term microeconomics and macroeconomics were coined by invented by okay, Professor Ragnar Frisch. Professor Ragnar Frisch. The famous book An Inquiry into Nature and Courses of Wealth of Nation was published in 1776. Which event will shift the but production possibility frontier outward? PPF curve अच्छी PPF curve रे दीटा जिनसर प्रोडक्शन से देखौची बटर आउ गन्स माने बटर अलगा रे गन्स अलगा रे गुड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करची से कहूची से प्रोडक्शन कर्व टा आउटवर्ड को केतळ को बल्ज हबो माने आउरी केते गुडा को पॉसिबिलिटीज माने प्रोडक्शन केतळ को इंक्रीज हे मनर 5टा गन को 10टा बटर पैकेट से प्रोड्यूस करि पारथिला तार जो फैक्ट्री डा अछि हेले भी 50टा 100टा केमती करि पारियो केमती करि पारियो प्रोडक्शन जहाँ भी अच्छी दीटा जिनसर करछि बटर गन छाड़ दियो ए और बी रो प्रोडक्शन करछि ए रो 50 यूनिट्स होछि ए रो 5 यूनिट्स होछि बी रो 10 यूनिट्स होछि हेले ए रो गुड 50 यूनिट्स बी रो गुड 100 यूनिट्स करियो त कोन करियार अछि माने सेम टाइम रे नुआ को मेथड यूज करियार अछि नुआ को मशीनरी आनिया पड़ियो किबा कोन नुआ गोटे कोन इन्वेंट करियो पड़ियो जिंदगी कि से सेम ऑप्टिमम रिसोर्सेस सेम ऑप्टिमम टाइम रे सेते सब जिंस अचीव कर दो बुझी पालो क्लियर और नॉट तो एडा होची न्यू एंड सुपीरियर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर माने गुड जिंस रो से जहां भी इंक्रीज करिवो तो ऑटोमेटिकली हे देबो हे एक्चुअली इडी कोन दीडा जिंस लेखिया कथा तो ओवरऑल तार मेन आंसर होची गुड न्यू आउ बेस्ट मेथड टा इन्वेंट करिया ओके देन प्राइस ऑफ गुड एक्सेस 1.50 and that of good Y is rupees 1. If a particular consumer's marginal utility for Y is 30 and he is currently maximizing his total utility, then his marginal utility of X must be calculate करो कोड वाई रो हां केंदे आसिला किन किन करी बाहर कर देला नै मल्टीप्लाई कर देला किन करला कोन कैलकुलेटर रे करला वाओ बढ़िया फार्मूला मते को फार्मूला मते डिराइव करिकि को हो कोन करला को नले केमते आन देला हाँ कार 1.50 को हाँ कोड़ा करलो कोना 30 into 1.50 30 into 1.50 करले केते आछी 45 यूनिट्स आछी हाँ ना आछी तो वेरी गुड तो मैक्सिमाइज करिया पे केतरा यूनिट्स ताको दरकार एक्चुअली सेटा सेति कि आगे जानछ ना नहीं मु काल देखुची कोन करिवो केमती फाइंड आउट करियो बुझिला ना नहीं से सब जिंस एटा टिके जाई कि सर करे
टिके जल्दी हैला तो 30 इंटू 1.50 करले केते यूनिट्स आछि 45 यूनिट्स आसुछि देन इकोनॉमिक्स हां कौन पे हैला एली कहले सी कहूछ देखो प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 1.50 and that of good y is 1 if a particular consumer marginal utility for y is 30 and he is currently maximizing total utility माने सी 30 रे ताको मैक्सिमम यूटिलिटी से अचीव कर दोछ हेले 30 रे मैक्सिमम यूटिलिटी जे ताको अचीव कर दोछ तो प्राइस 1.50 हेला को मध्य ताको केतरा यूनिट्स हेले मार्जिनल यूटिलिटी से अचीव कर दो माने मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन केमदी अचीव कर दो तो डायरेक्टली इनटू करियो तो एते सब जिंस दरकार नहीं तुमको जो इनफॉरमेशन दिया हेतिबो सेडा इनटू करके बाहर कर देबो हैला कोन हैला हस्च हियला एबे आंसर जडा एक्चुअली कर देल ना कोन बुझी पालो ना नहीं सिंपल जिंस जदि 30 रे ताको मार्जिनल यूटिलिटी अचीव हेउची से केते प्राइस रे थाउची थाओ तो 30 हेला को कोन एडा इनटू करले केते की यूनिट्स आसीबो सेडा होची तारो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन अवेल करि परला ले यूनिट्स माने 45 यूनिट्स हेला को ताको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन रीच हे जइथियो हैला इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी गिवन द स्टेटस ऑफ साइंस बिकॉज़ साइंस काहे की कहि परिबानी कैन नॉट बी गिवन स्टेटस ऑफ साइंस cannot be given the status of science कौन है रे यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं समस्त को सेम नहीं गोटे कॉमन मेजर ऑफ मेजरमेंट नहीं ए सब जिनस लागी कौन इकोनॉमिक्स को हमें साइंस कही क्लासिफाई करि परियानी बुझी पालो ना नहीं दैट इज द ओनली फैक्टर क्लियर देन माइक्रो इकोनॉमिक्स बुझले ना नहीं एटा 26 नंबर टा मेजरिंग रॉड ऑफ मनी इज अनस्टेबल माने समस्त को कोडा इक्विवेलेंट केते प्रोपोर्शन केते प्राइस रे मेजर करे छै सेडा कोन हम जाना की नहीं तार केतरा फैक्टर्स अछि इन्फ्लेशन अछि डिमांड अछि तार क्वालिटी ऑफ मटेरियल अछि लोकनर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अछि तो गोटे कॉमन मेजर अछि नहीं समस्त को सेम हेलाले गोटे का जिंस दीडा कंट्री रे किबा दीडा सिटी रे अलग रेट रे मिलुची तो कांस्टेंट नहीं ना यूनिवर्सल नहीं ना बट साइंस माने कोन सब जगह रे सेडा सिमिलर क्लियर Microeconomics theory deals with economics of individual जानचो individual units रे decision making करिवो in economics goods include material things which can be transferred which can be exchanged for one another none or both hella both of the following the term micro is defined from the dash word which means micro माने कोन small खाली मन रखिबो ग्रीक वर्ड रो हेची रैग्नर फ्रिस्ट एडागो इन्वेंट करछन which of the following issue relates to microeconomics microeconomics दिया गा होबो ना केमते होबो यूनिटी कहिछि वेरी गुड माने एडी को जिंस को हाईलाइट करिया हमें बीट को एडी देखो से कौन कहिछि इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग यूनिट्स माने जदी गुट्टे यूनिट ऊपर सेडा होची कि होनी कि कोन डिसीजन मेकिंग होची ना इंडिविजुअल यूनिट ऊपर तो से जिंस को मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स अंडर पके इंपैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन ऑन व्हीट प्राइसेस तो खाली गुट्टे एलिमेंट विषय कथा है तो दिस इज microeconomics production possibility curve shows maximum combination of how many products very important question so बहुत combinations देखेबो बट केतरा प्रोडक्ट रो कॉम्बिनेशन देखेबो दीडा प्रोडक्ट रो का कॉम्बिनेशन माने एडा 50% एडा 50 60 40 40 60 80 हला 75 25 से प्रकार देखेबो dash defined economics as science which inquired into nature and cause of wealth of nation Adam Smith I already देखिछु dash changed the name from political economy to economics Alfred Marshall
एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल इकोनॉमी रू इकोनॉमिक्स को चेंज करिसंदी डैश क्रिएट्स और फॉर्म्स यूटिलिटी डैश क्रिएट्स और फॉर्म्स यूटिलिटी satisfaction केमती क्रिएट हबो satisfaction केमती क्रिएट हबो प्रोडक्शन हैला पर क्रिएट हबो ना हमें कहे सेल्स हैला पर नहीं से कहूँ स्टार्ट्स और क्रिएट्स क्रिएट कोड रो होच स्टार्ट कोड रो होच प्रोडक्शन रो होच a consumption is the end of utility consumption is the end of utility macroeconomics is also called as income and employment theory macroeconomics is also called as income and employment theory dash is an act to use the goods and services to satisfy human wants ह्यूमन वांट सैटिस्फाई करिया पे कोडा यूज होची कंजम्पशन बुझी पालो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय के डेवलप कला अल्फ्रेड मार्शल एंड एच गॉसेंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल एंड एच गॉसेंस लेखे चीड़ा कौन कहले 36 टा देखिबे act to use the goods and services to satisfy human wants goods and services देखिले satisfaction मिले भोक लागु चली कहले को जिंसो इमेज की रील की देखिले कौन प्रोडक्शन हो अरे व्हाट क्रिएट से कहूची केमती यूज करले satisfaction हब्बो से पचाच ठीक है देखो डैश क्रिएट्स और फॉर्म्स यूटिलिटी कोड क्रिएट करियो पचारला एडी से पचाची इट इज एन एक्ट को एक्टिविटी रे हमें गुड्स एंड सर्विसेज यूज करिए हम सैटिस्फैक्शन लेवल टा बढ़ोचु ओके कंजम्पशन बुझले बे ना बुझले वेलफेयर डेफिनेशन के दे चंदी अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक्स बिहेवियर एज इंडिविजुअल डैश गुड्स आर नोन एज स्कैर्स गुड्स मन रखिबो एडा इकोनॉमिक गुड्स आर नोन एज स्कैर्स गुड्स इकोनॉमिक गुड्स आर माने स्कैर्स गुड्स रो अदर नेम होची इकोनॉमिक गुड्स हां एडा गोटे इंपोर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन कोडा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व इज concave to the origin not convex it is किंबा हिंदी जहाँ भी हैला ना नहीं concave to the origin if ppf is linear it implies माने हिंदी थिले constant opportunity cost point elasticity was propounded by के इन्वेंट करला luxury goods have dash degree of elasticity high degree of elasticity माने कौन तार डिमांड टा कम चेंज होती है ना बेसी चेंज होती है हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी माने चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली price elasticity of demand of product will be more elastic if it is हेले मते को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट केते प्राइस रे चेंजेस आसले केते डिमांड रे चेंजेस आसीबो सेडा त हमें जानचो विल बी मोर इलास्टिक माने चेंजेस केबे हमर अधिक हबो माने टिके प्राइस चेंज होले से प्रोडक्ट प्रति डिमांड टा केबे जल्दी चेंज हो दियो जेतोल तार बहुत अल्टरनेटिव्स थिबो जदि तार किछि अल्टरनेटिव आगा नथियो तो प्राइस केते चेंज हेले बाध्य होई किनियो पडियो ना ताको बुझला नै हैज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉइंट माने आ परे कोन हे जिवो जे माइनस हे जिवो तो मैक्सिमम पॉइंट कोडा when marginal product becomes
लेबर सरप्लस माने कौन एटा टिके इंपोर्टेंट लेबर सरप्लस माने कौन कंज्यूमर सरप्लस लेबर सरप्लस जा पचार था कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू फर्स्ट रे बिलिंग प्राइस minus actual price billing price minus actual price billing price minus actual price billing price minus actual price labor surplus माने कौन है रे परमेश्वर सोई पड़लु तो निदला अछि नहीं कौन असुविधा है तुम value of material plus capital used value of output minus value of material plus capital used एग्जाम रे दिड़ा जा कंसीडर करूछ हैला केते हैला ओके फाइन लास्ट देखो socialistic nature of economy means socialistic nature of economy means owned by state and public but सेडी कौन होतिला capitalistic society माने capitalistic nature of economy रे कौन होतिला only the central government or the main sectors will hold the total economy तापरे एटा देखो बहुत कष्ट क्वेश्चन ना supply function of a product x is Sx is equal to 5px plus 3 where px stands for price. The quantity supplied corresponding to price rupees 2 will be 5 into 2 into x into plus 3. तो केते होछ आज्ञा कौन px टा सेटा यूनिट्स रे से खाली कौन पचास नॉर्मल पचास बहुत कष्ट क्वेश्चन ना 10 थर लेखा प्रैक्टिस करके आसियो हैला एग्जामिनेशन क्वेश्चन जाय जा सब तार गोटे आग पछ हेड टेल ओनली बॉडी तो एते बड़ क्वेश्चन करला परे तम माइंड ब्लैंक हे जाइथिबो आई होप आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली the remaining things we'll discuss in the next class ठीक अछि थैंक यू सो मच